So, Assalamu alaikum, dear students. Well, today discuss an important topic that's to be called as a cloning. Okay, what's cloning all about, and what's cloning exactly? Cloning होती क्या है? देखिए, when we'll discuss the cloning, we say that cloning is a production of exact copy of an animal by means of asexual reproduction. So, what we call as cloning, it's a production of an animal by means of asexual reproduction. So we are generating an animal, we are generating an organism by cloning, but without involvement of gametes. uh, we'll discuss it in later how the gametes are not, why the gametes are not involved, and how we are generating the an animal like a female sheep called as dolly is a permanent example, is a common example in case of cloning, what we are going to study over here. So we will discuss that I'm just telling you that the production of any of the animal by means of without the asexual reproduction, that is to be called as a cloning. And we know that when the two animals which are genetically identical, which are genetically same, or they are genetically identical, they possess the same genotypes, we call these animals as genetically identical animals. Okay, and any animal which is genetically identical to its parent is called clone. Okay, any of animal that is genetically identical to it is identical, genetically identical, having the same genotype like that of its clone, it is to be called as it's having the same genetic makeup, having the same genotype like that of its parent, we called an animal a clone. We called an animal a clone. Okay, so I just mentioned that cloning is a production of exact copies of an animal without the involvement of gametes or by means of asexual reproduction. So listen here, the cloning was for first time successfully done in animals, for first time done by, it was on Wilmot and his colleagues, and the place where they make this possible, where they make this cloning possible, it was Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. Okay, Roslin Institute in Edinburgh, Scotland was a place while Wilmot carry out it is important process that is called cloning. And from this process cloning, they raise the for first mammal, that is the dolly, a female ewe, a female ewe. Okay, now they cloned, I just mentioned earlier that they cloned the female, they cloned the sheep. The name of the sheep was dolly, and it was cloned from its parent sheep. The dolly was cloned from its parent sheep, and name of the parent sheep was fin dors, it was fin dorest sheep. It was a female sheep actually. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉली जो शीप थी ना, जिसको क्लोन किया किसने, जिसको क्लोन किया विलमॉट ने, तो इन द रोसलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, and they raised a clone. Name of the clone was dolly, and I'm telling you that the clone is raised from its parent. The name of the parent is fin, parent sheep, female sheep. It's actually a female sheep. It's the name of female sheep was Fin Dorest sheep. Okay, Dorest sheep. It's a female sheep. And ultimately, when the implanted the egg, and finally after 148 days, the complete development take place, and the Blake face give birth to a dolly sheep on 14 Feb 2003. It was the birth of dolly take place on the day it was 5th July 1996. So when was after complete development, when it was
the birth of birth of Dolly sheep take place? It was 5th July 1996. And add one more point, that Dolly was first mammal to be cloned. It was first mammal to be cloned. Okay, first mammal to be cloned was Dolly. and and ultimately and unfortunately, after 7 years, its death took place, and it died. Finally, the Dolly died on February. It's on 14th February 2003 due to a lung disease. Okay, due to the lung disease, its death. Cause of death was lung disease. Day was 14 Feb, and the year was 2003. It is the date when the death of Dolly take place. It is the birth when, after the 148 complete 48 gestation period, the birth or potubration take place. Potubration of the female sheep, that's Dolly, take place. Now we'll discuss cloning. What's a cloning all about? Listen here. We know that cloning in animals, that it is done by the transfer of nucleus. How this happens? How this happens? Okay, as it how it's possible? How we carry out the cloning? Listen, in a cloning, we usually take the nucleus of a normal cell. We take a nucleus of a normal cell of an animal. Keep it in mind, we are taking the nucleus of the normal cell of an animal which we wish to clone. We wish to clone an animal, we take a cell from that animal and transfer that cell into an empty cell, in an empty cell of another animal. Okay, the cell that is without nucleus, or the nucleus has been removed. तो मुझे कहना ये है, जो एनिमल हम क्लून करने जा रहे हैं उसके सेल से हम न्यूक्लियस निकालते हैं और उस न्यूक्लियस को ट्रांसफर करते हैं दूसरे सेल के अंदर। लेकिन जिस सेल के अंदर हम ये न्यूक्लियस ट्रांसफर करते हैं उससे हम पहले न्यूक्लियस निकाल देते हैं। ठीक है, उससे हम पहले न्यूक्लियस निकाल देते हैं। उसके बाद जो न्यूली सेल बन जाती है उसको हम एलो करते हैं डेवलप होने के लिए। नॉर्मली डेवलपमेंट होती है न्यूली सेल की, और वो न्यूली सेल जो होती है उसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट एक न्यूक्लियस, उस ऑर्गेनिज्म या उस एनिमल का न्यूक्लियस जो हम चाहते हैं हम क्लोन करें, और दूसरा वो सेल जिससे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में लाते हैं, जिसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ओके, उसके निकाल दिया जाता है, उसे न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है, फिर दूसरे सेल का न्यूक्लियस में डाल देते हैं, फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं इसके फीमेल के यूट्रस के अंदर, जिसकी हमने सेल ली थी। न्यूक्लियस नहीं लिया था, जिसकी हमने सेल ली थी। और उसके बाद फुली डेवलपमेंट के बाद एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो जैसे मैंने आपसे अभी कहा, न्यूक्लियस क्लोनिंग में क्या होता है, एक न्यूक्लियस निकाला जाता है अपन एनिमल, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे एनिमल के सेल में। लेकिन जिस एनिमल के सेल में हम ये न्यूक्लियस डालते हैं उसके सेल के हम न्यूक्लियस को बाहर पहले निकाल देते हैं। ठीक, नाउ व्हाट्स टू बी फॉर्मड, और जो नई सेल बनती है उसके लिए उसको हम नॉर्मल डेवलपमेंट लेते हैं। उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, और एग्जैक्टली फिर जो आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड जो एनिमल प्रोड्यूस हो जाता है, क्लून बोलते हैं इसको, एनिमल जो प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, आफ्टर द एग्जैक्ट कॉपी इन एनिमल दैट इज टू बी प्रोड्यूसर। Now I will just mention the name of the important two sheep. Okay, the important I will just discuss the type of the ewe that were involved. First, let me tell you ewe. There's a term ewe, E-W-E-U. What's black face, Scottish black sheep ewe, Finn Dorset ewe. What's ewe? Ewe is a female sheep. Ewe. Okay, ewe. Ewe is female sheep. It's a female sheep. The term ewe means female sheep. तो जब डॉली की क्लूनिंग हो गई, जो डॉली बन गई, जो डॉली मतलब डेवलपमेंट हो गई डॉली की, तो
जो इसके दो शीप इन्वॉल्व थे इन क्लूनिंग ऑफ डॉली में, वो कौन से थे? दे वर फिन डॉरसेट यू, फिन डॉरसेट यू एंड स्कॉटिश ब्लैक शीप यू। यू मैंने इसीलिए कहा, यू वी कॉल्ड यू, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि यू इज अ फीमेल ब्लैक, इट्स अ फीमेल शीप। ओके, दोनों फीमेल शीप थी। वन वाज फिन डॉरसेट जिससे न्यूक्लियस निकाला गया, और स्कॉटिश ब्लैक फेस यू जिसकी सिर्फ सेल ली गई, सेल से न्यूक्लियस निकाल दिया गया और उसके बाद इसका न्यूक्लियस डाल दिया गया। फिर इसी ब्लैक फेस यू के अंदर डेवलपमेंट होगी जो न्यूली सेल बन गई थी। ये याद रखिए आप, दो शीप जो इन्वॉल्व थे डॉली के क्लूनिंग में। वन वाज फिन डॉरसेट, ओके, फिन डॉरसेट, and second was Scottish black ewe. They were the two animals that were involved. Now मैं आप कुछ स्टेप्स बताऊंगा, मतलब how it was possible to obtain, how it was possible the development and the obtaining of the cloning which we called as a dolly. देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे दो फीमेल्स इन्वॉल्व हैं। एक फीमेल है दैट्स कॉल्ड फिन डॉरसेट शीप, और दूसरी फीमेल जो है दैट इज कॉल्ड फीमेल स्कॉटिश ब्लैक शीप। मैं स्टेप्स बताऊंगा हाउ इट वाज पॉसिबल। तो जो फीमेल फिन डॉरसेट थी ये एक्ट करती एज अ पेरेंट, तो इससे इसके मेमोरी ग्लैंड से सेल को निकाला गया। ठीक है, इसकी मेमोरी ग्लैंड से सेल को निकाला गया और उस सेल से फिर निकाला गया न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस जैसे न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी सेल इंसर्टेड इनटू एम्प्टी सेल, इसे न्यूक्लियस निकाला गया। तो दूसरी फीमेल जो इन्वॉल्व थी इट वाज फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस। उस फीमेल स्कॉटिश से एग सेल ली गई, इस फीमेल से मेमोरी सेल ली गई, इस फीमेल से एग सेल ली गई। तो डिफरेंट टू सिचुएशंस देखिए। जो फीमेल फिन डॉरसेट से इससे सेल निकाली गई दैट वाज टेकन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, तो यहाँ से जो सेल ली गई दैट वाज एन एग सेल। अब यहाँ से जो एग सेल ली गई ना, उस एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस उसको रिमूव किया गया। ठीक, उसको रिमूव किया गया। तो फिर क्या रह गई? रिमूव के बाद वो सिंपल सेल रही विदाउट न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस ऑलरेडी ऑब्टेन हुआ था फीमेल फिन डॉरसेट शीप से, उसको इंसर्ट किया गया किसके अंदर? उसको इंसर्ट किया गया उस सेल के अंदर जो ऑब्टेन या जो ली गई थी फीमेल स्कॉटिश ब्लैक शीप में। तो उसके बाद व्हाट हैपन नेक्स्ट? द न्यूली सेल दैट वाज ऑब्टेन्ड with the nucleus of the fin डॉरसेट sheep, it was inserted in the uterus. Okay, it was inserted in the uterus of the Scottish black sheep. The newly cell that was obtained by the combination of nucleus and an empty cell. The nucleus was inserted into the empty cell. The nucleus was inserted into the cell that was not having, that was where the nucleus was to be, where the nucleus was removed, and finally the newly cell that was obtained, it was inserted in the uterus of female Scottish black sheep. तो फीमेल स्कॉटिश ब्लैक शीप के अंदर इसको इंसर्ट किया गया, इसके यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया गया, making it pregnant. Okay, making it pregnant. Then after 148 days, this pregnant Scottish, after the 148 days, when the complete development of this cell take place, and it was developed in an offspring, and after 148 days, are we called as a gestation period, this
This pregnant Scottish sheep, it gave birth to dolly sheep. It gave birth to a dolly sheep, cluner dolly sheep. It gave birth to a dolly sheep. Okay, though the dolly sheep was given birth, it was given birth by this Scottish black sheep, but it was found to be exactly identical to the original Finn Dorset sheep, from whose cell nucleus was obtained. Got it? Okay. It was found exactly identical. Okay, it was found exactly identical to origin Finn Dorset sheep. So we call that. So Dolly was a clone. Dolly was a clone of Finn Dorset sheep. Dolly was a clone of Finn Dorset sheep, whose cell nucleus was used in developing. All the body cells, all the body cells of dolly sheep contained, okay, contained the same, they contain the same set of the chromosomes having exactly the same genus as Finn Dorset sheep cells. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके सेल्स के अंदर जितने भी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, सेल्स के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, दे वर एग्जैक्टली, और द जेनेटिक मेकअप of the dolly sheep was exactly same. It was exactly same. Okay, it was exactly same as the genes of the Finn Dorset sheep. Though डॉली sheep, although the dolly sheep को बर्थ किया किसने, बर्थ दिया उसको स्कॉटिश sheep ने, लेकिन रियल जो इसकी रियल मदर है, लेकिन इस जो इसकी रियल मदर है, यहाँ से कहते हैं रियल मदर जो थी इसकी, लेकिन हम ये मतलब हम ये कहेंगे एक्चुअली द बर्थ तो दी किसने, इसकी बर्थ इसकी दी किसने, बर्थ इसकी जो डॉली शीप थी उसकी बर्थ दी किसने, उसकी बर्थ दी दिस फीमेल स्कॉटिश शीप, बट हम जो कहेंगे इसकी रियल मदर जो थी, इट वाज फिन डॉर्सेट शीप. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल द जेनेटिक मेकअप, जितना भी इसका जेनेटिक मेकअप था वो सारा रिजेंबल करता था किससे, सारा रिजेंबल करता था फिन डॉर्सेट शीप से. ओके, सो दो द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग of the cell ordinarily was from that of the Scottish black sheep was to be removed. Dolly did not show any of the we know that any of the characteristic features of the Scottish black sheep. Suppose इसके कोई भी characteristic नहीं था, डॉली में इस sheep का कोई भी characteristic नहीं था. Like मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे इसका जो face था वो था black, इसका black face था, ओके, लेकिन इसका जो फेस था वो तो, लेकिन जो डाली प्रोड्यूस हो गई ना उसका तो ब्लैक फेस था ही नहीं. दैट्स व्हाई वी जस्ट कॉल दैट ब्लैक फेस शीप हैड अ ब्लैक फेस, बट डॉली डिड नॉट शो एनी सच अ काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिड नॉट शो एनी सच ऑफ द फीचर्स. तो हम ये कहेंगे इसकी जो रियल मदर थी दैट वाज द फीमेल Finn Dorset sheep. Okay, this was all about the story of Dolly. This was all about the story of the Dolly and what's cloning all about and how Dolly was obtained. This is a picture. Dolly cloned sheep. ये picture है Dolly cloned sheep की. तो ये था आपके इस चैनल का last topic. So this was the last topic of the chapter, that is the reproduction in animals. So in the coming lectures I will discuss about I will start another chapter, that is age of adolescence. So thank you. Hope you have got the concept of the cloning and the steps related to it.
ओके, अनि कोई आप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो, या रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गए हो इसमें से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इन नेक्स्ट जो कमिंग जो वीडियोस हैं उनमें मैं वो अकॉर्डिंगली वो पॉइंट्स जो आपके होंगे मैं अकॉर्डिंगली उनको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।